न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज TV। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। साल में तीसरी बार कल बिहार जाएंगे राहुल गांधी। कौन है एमए बेबी जिन्हें माकपा ने बनाया है पार्टी का नया महासचिव। मानसून में दिल्ली की सड़कों पर नहीं होगा जल भराव। तो आज देखते हैं खबरें विस्तार से। साल में तीसरी बार कल बिहार जाएंगे राहुल। चुनावी राज्य बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 7 अप्रैल को इस साल तीसरी बार राज्य का दौरा करेंगे। वह पटना में संविधान की रक्षा विषय पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेंगे। वह पार्टी नेता कन्हैया कुमार के गृह नगर बेगूसराय भी जाएंगे, जो वर्तमान में पूरे राज्य में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने। लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे। आप भी व्हाइट टी-शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए। सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए आइए हम मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाए। बेगूसराय कन्हैया कुमार का गृह जिला है, जो वर्तमान में पूरे राज्य में पदयात्रा कर रहे हैं। 30 मार्च को कन्हैया कुमार को अपने निजी सुरक्षा गार्डों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद पूर्वोत्तर बिहार के अररिया जिले में अपनी पदयात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। चुनावी राज्य बिहार में कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 7 अप्रैल को इस साल तीसरी बार राज्य का दौरा करेंगे। वह पटना में संविधान की रक्षा विषय पर आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेंगे। वह पार्टी नेता कन्हैया कुमार के गृह नगर बेगूसराय भी जाएंगे, जो वर्तमान में पूरे राज्य में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि बिहार के युवा साथियों, मैं 7 अप्रैल को बेगूसराय आ रहा हूं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने। लक्ष्य है कि पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं की भावना दिखे, उनका संघर्ष दिखे, उनका कष्ट दिखे। आप भी व्हाइट टी-शर्ट पहनकर आइए, सवाल पूछिए, आवाज उठाइए। सरकार पर आपके अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, उसे हटाने के लिए आइए हम मिलकर बिहार को अवसरों वाला राज्य बनाए। बेगूसराय कन्हैया कुमार का गृह जिला है, जो वर्तमान में पूरे राज्य में पदयात्रा कर रहे हैं। 30 मार्च को कन्हैया कुमार को अपने निजी सुरक्षा गार्डों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद पूर्वोत्तर बिहार के अररिया जिले में अपनी पदयात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी-शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। अगली खबर, कौन है एमए बेबी जिन्हें माकपा ने बनाया है पार्टी का नया महासचिव। सीपीआई की वरिष्ठ नेता मरियम अलेक्जेंडर बेबी को रविवार को तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित पार्टी कांग्रेस में पार्टी का महासचिव चुना गया। इस तरह वह केरल से EMS नबुंदुरीपाद के बाद यह पद संभालने वाले दूसरे नेता बन गए। 75 वर्ष से कम आयु के केंद्रीय समिति के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक एमए बेबी पूर्व महासचिव प्रकाश करात से कमान संभाली, जिन्हें पिछले सितंबर में सीताराम येचुरी के निधन के बाद पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति का समन्वयक नियुक्त किया गया था। कोल्लम जिले के प्रकुल्लम में जन्मे बेबी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले पहले सीपीआई महासचिव हैं। हालांकि वह स्वयं को नास्तिक बताते हैं, लेकिन पोलित ब्यूरो में वह एकमात्र ईसाई चेहरा है। वह वामपंथी पार्टी के सांस्कृतिक राजदूत भी हैं, जिन्होंने कोच्चि द्विवार्षिक कला प्रदर्शनी और दिल्ली में स्वरालय सांस्कृतिक संगठन शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेबी ने अपनी राजनीतिक यात्रा केरल छात्र संघ से शुरू की थी, जो वर्तमान में भारतीय छात्र संघ का पूर्ववर्ती है। सीपीआई की वरिष्ठ नेता मरियम अलेक्जेंडर बेबी को रविवार को तमिलनाडु के मदुरै
में आयोजित पार्टी कांग्रेस में पार्टी का महासचिव चुना गया। इस तरह वह केरल से EMS नबुंदरीपाद के बाद यह पद संभालने वाले दूसरे नेता बन गए। 75 वर्ष से कम आयु के केंद्रीय समिति के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक MA बेबी पूर्व महासचिव प्रकाश करात से कमान संभाली, जिन्हें पिछले सितंबर में सीताराम येचुरी के निधन के बाद पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति का समन्वयक नियुक्त किया गया था। कोल्लम जिले के प्रकुल्लम में जन्मे बेबी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले पहले CPI महासचिव हैं। हालांकि वह स्वयं को नास्तिक बताते हैं, लेकिन पोलित ब्यूरो में वह एकमात्र ईसाई चेहरा है। वह वामपंथी पार्टी के सांस्कृतिक राजदूत भी हैं, जिन्होंने कोच्चि द्विवार्षिक कला प्रदर्शनी और दिल्ली में स्वरालय सांस्कृतिक संगठन शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेबी ने अपनी राजनीतिक यात्रा केरल छात्र संघ से शुरू की थी, जो वर्तमान में भारतीय छात्र संघ का पूर्ववर्ती है, जो मुंबई के तर्ज पे बताया जा रहा है। क्या दिल्ली में हम देखते हैं कि मॉनसून सीजन में हर जगह पे जल भराव होता है, क्योंकि जो भी सारे नेल थे, सीवर, जो भी हमारे नाले थे, सीवर लाइन थी, उनमें डिसिल्टिंग नहीं हुई थी और कोई 1-2 साल से नहीं 10-20 साल से डिसिल्टिंग नहीं हुई है। इसलिए जब भी बारिश होती थी तो सारे भर जाते थे, सड़क पे पानी आ जाता था और वो लोगों के घरों में बैक फ्लो मारता था। इसलिए हमने ये बड़ी मशीनें लाकर, और हमारी कोशिश है कि हर विधानसभा में एक मशीन हो, ताकि सारे सीवर की सफाई हो पूरे अच्छे से, और उसके बाद में सारे सीवर में CCTV कैमरे से हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि 100% क्लीन हो गया है। तो ये हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश है कि मानसून में कहीं पर भी वाटर लॉगिंग, जल भराव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। सर, क्या इसमें मजदूर अब भेजना नहीं पड़ेगा सीवर के लाइन में, क्योंकि पहले कई बार जाने भी जाते थे? नहीं, इसमें ये क्योंकि आधुनिक मशीन है, पाइप इसकी काफ़ी अंदर चली जाती है, तो हमारी कोशिश है कि कोई भी मजदूर को सीवर लाइन में ना उतारा जाए, और उसके लिए चाहे हमको कोई भी आधुनिक मशीनें लेनी पड़े, हम उसको लेंगे। तो क्या इसका प्रयोग अभी देश में कहीं हुआ इस तरीके की मशीनों का? ये मशीन जो है पहले से मुंबई में चल रही है, वहाँ पे ऐसी 100 मशीन चल रही हैं, और फिर गुजरात में भी चल रही है, 30 मशीनें गुजरात में चल रही हैं। आज ये मशीन हमारे दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मुंबई से आई है, मगर हमने पिछले हफ्ते ही सुपर सकर मशीन 32 मशीनों का ऑर्डर कर दिया है। ये एक और अच्छी मशीन है, इसको भी हम देख रहे हैं, ताकि दिल्ली की सारी विधानसभाओं को कवर कर लें। अगली खबर, मानसून में दिल्ली की सड़कों पर नहीं होगा जल भराव। दिल्ली की बीजेपी सरकार मानसून से पहले जल भराव की पुरानी समस्या से निपटने और सीवर सफाई के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। सरकार ने सीवर सफाई को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने मुंबई से अत्याधुनिक रिसाइकलर मशीन मंगवाई है। इसका आज ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में सफल ट्रायल किया गया। दिल्ली के जल संसाधन मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस मशीन का निरीक्षण किया। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, हम हर मानसून में देखते हैं कि कैसे दिल्ली की सड़कें पानी में डूब जाती है और कई बार यह पानी घरों तक भी घुस जाता है। इसका बड़ा कारण है कि सीवर और नालों की सिल्टिंग पिछले 10-20 सालों से नहीं हुई। हमने इसके समाधान के लिए बड़ी मशीनें मंगवाने की शुरुआत की है। हमारी कोशिशें है कि हर विधानसभा में एक ऐसी मशीन हो जिससे सीवर की संपूर्ण सफाई हो सके। दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सफाई के बाद हम CCTV कैमरे से जांच कर 100% क्लीनिंग सुनिश्चित करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मानसून के समय दिल्ली को जल भराव से पूरी तरह मुक्त। दिल्ली की बीजेपी सरकार मानसून से पहले जल भराव की पुरानी समस्या से निपटने और सीवर सफाई के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है। सरकार ने सीवर सफाई को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। दिल्ली सरकार ने मुंबई से अत्याधुनिक रिसाइकलर मशीन मंगवाई है। इसका आज ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में सफल ट्रायल किया गया। दिल्ली के जल संसाधन मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने इस मशीन का निरीक्षण किया। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा, हम हर मानसून में देखते हैं कि कैसे दिल्ली की सड़कें पानी में डूब जाती है और कई बार यह पानी घरों तक भी घुस जाता है। इसका बड़ा कारण है कि सीवर और नालों की सिल्टिंग पिछले 10-20 सालों से नहीं हुई। हमने इसके समाधान के लिए बड़ी मशीनें मंगवाने की शुरुआत की है। हमारी कोशिशें
है कि हर विधानसभा में एक ऐसी मशीन हो जिससे सीवर की संपूर्ण सफाई हो सके। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सफाई के बाद हम सीसीटीवी कैमरे से जांच कर 100% क्लीनिंग सुनिश्चित करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मानसून के समय दिल्ली को जल भराव से पूरी तरह मुक्त। Representatives of the media, friends and comrades. We assembled in Madurai for the 24th Congress of Communist Party of India office. After having had two tragic heavy blows suffered by the party. The General Secretary of our party, Comrade Sitaram died after the process for the 24th Party Congress began. Few months ago, another Politburo member, Comrade Kodi Malik, died. Also remember the demise of Comrade Mutudev Bhattacharya after the last party congress. But the death of the serving incumbent General Secretary, Comrade Churi, was an irreparable loss for the party. But nature's decision, we cannot do much about that. But now we come to the close of the 24th Party Congress. We all realize that even in the absence of Comrade Churi, who was a cover of strength for our party, in a collective manner, the Politburo and Central Committee was able to discharge the political and organizational tasks, the preparation and the conduct of the 24th Party Congress in a successful manner. In doing so, the contributions made by the coordinator of the Politburo and Central Committee, which is an extraordinary responsibility exercised by Comrade Prakash Kara, played a very important role in addressing political, ideological and organizational tasks connected with the holding of this 24th Party Congress. Comrade Churi had to be in hospital in critical condition for a long time. Even when Comrade Churi was treated and we were expecting his staging a comeback with strength, health. We used to, Comrade Brinda Kara used to regularly coordinate the treatment of Comrade Churi. And we have had discussions with Comrade Churi, how he should take care of his health well and don't accept too many programs, and you should do only the necessary state conferences as part of the party programs. But parallelly we were working. The Politburo and Central Committee was collectively working. Even the Central Secretariat was also very active during this period. So we have shown this party, an extraordinary party of the working class, of the peasants, of toiling masses. When called upon, this party is capable of addressing and working in extremely difficult circumstances. An occasion like this, I am not expected to make a big change. I know as you all know. But we should recall, this party congress has turned out to be a party congress of unity and consolidation. We have had detailed discussion, introspection, critical and subsequent assessment. Some comrades during the course of the discussion said that is very, very candid
self-criticism made by the Politburo we appreciate, and some Congress demanded that this practice should continue. Now we have set out our political craft, and when you compare this party Congress with the earlier party Congresses, there was an extremely important new element introduced in the working of this party Congress. That is, reviewing the tactical line, the implementation of the tactical line charted out in the last party Congress, where it succeeded, where it suffered setbacks. So only after having examined the working of the tactical line during the last 3 years, the new political resolution needs to be discussed and formulated. So Central Committee, as has already been explained, first of all reviewed the implementation of the tactical line. On that basis, we have discussed the political resolution, which is the document which sets out the future course of action. This exercise we have successfully taken, and the direction is very clear. The task of the progressive movement, democratic movement, working class movement is to do all that is possible by mobilizing all sections of society who can be mobilized to defend constitutional values, to defend democracy, to defend secularism. The threat of the neo-fascist tendencies from the ruling classes, the triumvirate of Narendra Modi, Amit Shah, and the person sitting in Nagpur, Mohan Bhagat, they are taking the country to the path of neo-fascist onslaught for the people of our country. Well, recently in the media, we have been reading about how a popular film, a Malayalam film, in which very eminent artists are involved, it's an assault by Sanpaywa. Organizer, the mouthpiece of RSS, continuously writes against this film. What was the sin of that film? In a small portion of that film, there are some references of the horrible, gruesome, genocidal attacks and murder, mayhem, carried out by Sangham in Gujarat. Is there in the memory of everybody? There is a reference about that. But that film has been certified by the Central Board of Film Certification, where RSS representatives, RSS nominees are there. They have certified the film. But the film, after having been released, when this became a discussion, there was threats issued against those who have worked this particular film. I don't want to go into the details. Afterwards, there are continuous raids taking place on the premises of all those who are associated with this film. So, what is being pointed out in the political resolution prepared for the 24th Party Congress of CPIM, that neo-fascist trends are being displayed by the ruling classes in our country. This is being proved during the course of our party Congress. While party has set out the task of developing broad-based forces of democracy and secularism to come together to fight this danger that the entire country is faced with, the political resolution also underpins the importance of developing the independent strength of the CPIM and left and democratic forces. We have also discussed to strengthen CPIM and left and democratic forces, we have to take up livelihood issues. The economic policies being pursued by Narendra Modi government, the Hindutva, corporate, communal nexus that has developed in our country, this has to be exposed, and all sections of people should be mobilized in the fight not only for restoration of democracy and secularism,
but also for the livelihood issues of the people. So these political tasks have been identified. The organization review has examined the state of the party. This is the party, the red flag party, which defends the rights of the toiling masses. At the same time, we have to introspect why still substantial sections of urban poor, rural poor, and toiling masses, how reactionary forces are able to attract them behind them. We have had discussion. We have taken certain self-critical review, which we will be, after the new Central Committee meets, we will be taking steps in discussion with the state committees, how the decisions of the Central Committee, this 24th Party Congress, can be implemented. Rights and position of the women is very important. A great revolutionary poet said, half of the sky is held high by women. But we are a patriarchal society. The rightful position of women is not generally given to them. This party congress discussed this matter, and we have been systematically trying to attract more women into our organization. And not just symbolically, as a practical step, this party congress elected a Central Committee with a higher percentage of women's representation. We only had 17% women in the Central Committee. This Central Committee, this party congress elected the committee where we have 20% representation of women. We don't claim that this is a very, very regrettable achievement. Still, a lot more is expected. I don't want to go into different aspects of the decision of this particular party congress. In the forward march of CPIM, this party congress, this 24th party congress, is a landmark. Unlike previous congresses, in this party congress, a substantial section of the PB and CC is stepping down because of the age curtailment. It's a big challenge to the new PB and CC committee. But we want new generations to be promoted into the party. At all levels, we have to consciously do this. The competence, the experience of all the comrades who are stepping down, they will continue to help our party in different capacities for the all India functioning of the all India Center also. Comrades, when we disperse from here after the public rally, we would be going as different party leaders. Those who have assembled here, we assemble here with a particular level of consciousness. But when we go back from here, we learn a lot of things through the discussions and debate. The approach of the communist movement is to learn from comrades at different levels, learn from discussion, learn from criticism. Not only from within the party, at different levels, we want to learn. We are willing even to learn from our critics, our adversaries. If they raise honest criticism on genuine ground, we are willing to take note of that, and if there is any need, we are willing to correct. That is how the working class party, the communist party would go forward. There are certain decline in the strength and influence of our party. That's the reality which we recognize. But sooner than later, if we work together, if all the branches, all the intermediary committees, all the state committees, and there are class and mass organizations in which over 50 million members are there, over 5 crore members are there in various class and mass organizations. If we are able to activate all these organizational structures
we would be able to face the challenges that we are facing. With these few words, I conclude my brief observation. Thank you. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।